Good morning. I'm Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So most of you are appearing for LIC Assistant Clerk. It is indeed a good opportunity. It has come after 10 years. So first of all, we will attempt mock test 3 today. And mock test 3 of the mock test, which is available in, the link is available in description column and comment column. I have suggested a very excellent mock test to you. And the people, those who have used it, has always complimented me for suggesting such a good mock test. So do subscribe this mock test today and start preparing. So we are at the third mock test today. Then first hour we will spend on language, then take half an hour rest, second hour on numerical ability, half an hour rest, and third hour we will do the reasoning. So follow this schedule. You can very easily clear LIC Assistant Examination. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. LIC Assistant Examination बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है. 10 साल के बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है. एंड आप लकी हैं कि आपके चैनल पे ये मैंने मई में ही बता दिया था, और जो लोग तब से तैयारी कर रहे हैं वो ऑलरेडी एडवांटेज पे. जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है उनके लिए अभी भी वक्त है और हम इसको कवर कर सकते हैं. तो आज हमने थर्ड मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है इसका, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम के अंदर है. पहला घंटा आप लगा दीजिए लैंग्वेज पे, आधे घंटे का रेस्ट दे दीजिए. दूसरा घंटा आप लगा दीजिए न्यूमेरिकल एबिलिटी पे, आधे घंटे का रेस्ट दे दीजिए. और तीसरा घंटा आप लगा दीजिए रीजनिंग पे. इस तरह से शेड्यूल बना के चलें, आप इस पेपर को पास कर सकते हैं. ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू.